Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia menyatakan kekecewaan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menyatakan puluhan platform pinjaman daring bersalah terkait penetapan batas manfaat ekonomi. Menurut AFPI, keputusan tersebut tidak mencerminkan fakta yang terungkap selama persidangan, karena tidak pernah terbukti adanya kesepakatan bersama untuk menetapkan suku bunga di industri tersebut. AFPI menegaskan bahwa batas maksimum manfaat ekonomi yang selama ini diterapkan justru merupakan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai upaya melindungi konsumen dari praktik predatory lending dan maraknya pinjaman online ilegal dengan bunga sangat tinggi. Karena itu, sebagian besar anggota asosiasi berencana mengajukan banding terhadap putusan tersebut melalui jalur hukum. Meski demikian, AFPI memastikan operasional platform pinjaman daring tetap berjalan normal dan tidak memengaruhi kewajiban pembayaran para peminjam. Asosiasi juga menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas industri serta terus berkoordinasi dengan seluruh anggota dalam menempuh langkah hukum sesuai mekanisme yang berlaku. Kerusuhan pecah di Kathmandu setelah mantan Perdana Menteri KP Sharma Oly ditangkap terkait kasus kematian dalam penindasan demonstrasi tahun 2025. Para pendukungnya turun ke jalan, membakar ban, memblokir jalan, dan bentrok dengan aparat sambil menuntut pembebasan segera. Penangkapan ini juga menyeret mantan Menteri Dalam Negeri Ramesh Lehak dan memicu kecaman dari Komunis Party of Nepal yang menilai langkah tersebut sebagai balas dendam politik, bahkan memperingatkan potensi meluasnya aksi protes secara nasional. खास अहिले चाहिँ हामी हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री उहाँहरूको चाहिँ जुन अहिले राज्यको तर्फबाट हिजो मात्रै गठित नवगठित सरकारले जुन एकलौटी ढङ्गले जुन चाहिँ उनीहरूले राजनीतिक प्रतिशोधको स्रोत बोकेर उहाँहरूलाई जुन खालको अहिले व्यवहार गरेको छ या उहाँहरूलाई अहिले रिहाई चाहिँ के अरे पक्रेको छ अनुसन्धानलाई लगेको छ त्यसमा हामीले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो रिहाई हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। नेपाली जनताको लागि सहयोग हुने छैन। यो नेकपा एमालेको नेता अथवा काङ्ग्रेसको एकजना नेतासँगको मात्रै होइन, यो चाहिँ एउटा लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले गरेको हो भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। हाम्रो पार्टीको अध्यक्षमाथि जुन हिसाबले राति नै प्रहरीको यो सरकारको दमनबाट जुन हिसाबले पार्टी अध्यक्षलाई जबरजस्ती कानुनी कुनै प्रक्रिया नपुरिकन जुन जबरजस्ती गरेर यहाँ पक्राउ गरेको छ, त्यसको विरुद्धको लागि हामी यहाँ अहिले मानिसहरूको यो सडकमा आएका छौँ। हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न खोज्दा पनि यहाँ प्रहरीको दमन, यो सरकारले दमन गर्न खोजिरहेको छ। शासनको विरुद्ध, करप्सनको विरुद्ध जुन हिसाबले जेएनजीले गरेको त्यसमा हाम्रो पनि फुल्ली समर्थन थियो। त्यतिखेरको सबै खाले समर्थन हुँदा पनि त्यो घटना गरे, त्यो दुःखद घटना हो। आज पनि त्यो कार्य दिशातर्फ यो सरकार शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएर आज हामी सांगीतिक
मात्रै दिन खोजेका हुन्। यदि यो आज बेलुकासम्म हाम्रो पार्टीको अध्यक्षलाई रिहा गर्यो, भोलिदेखि हामी यदि यो गरेन भने दिल्लीभरि देशव्यापी आन्दोलन गरेर हामीले प्रतिकारमा उत्रिनेवाला छौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। Weekend, the Iranian regime launched missiles nearly 4,000 kilometers toward Diego Garcia, a remote island in the Indian Ocean that hosts a major joint US-UK military base. You can look at the map. You can see the range of the Iranian ballistic missiles today. They can reach Paris. It reaches London, Athens, Copenhagen, Riga. It reaches deep into Europe, 4,000 kilometers, double the range they claimed. And if it has doubled once, it can double again, from 4,000 to 8,000 kilometers. That would make it capable of striking the heart of the US. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyatakan kekecewaan pada organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO yang tidak menunjukkan dukungan terhadap langkah Amerika dan Israel menyerang Iran. Kurangnya dukungan terhadap Amerika menyebabkan Selat Hormuz masih tertutup bagi jalur pelayaran sampai saat ini. Trump menyebut sejak 25 tahun lalu NATO kurang menunjukkan dukungan maksimal terhadap Amerika Serikat dan menyebut organisasi NATO sebagai macan kertas. Namun sebelumnya Trump juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak membutuhkan keberadaan NATO. Adapun pada masa jabatan pertamanya, Trump berulang kali menyatakan kecaman terhadap NATO. Menurut beberapa laporan pejabat Gedung Putih, Trump secara terbuka mempertimbangkan menarik diri dari aliansi pertahanan tersebut. And I'll say it publicly, we're very disappointed with NATO because NATO has done absolutely nothing. And I've always said, 25 years ago, I mean, I was somebody that wasn't a politician, but I was always involved in politics and I understood politics. I said 25 years ago that NATO's a paper tiger, but more importantly, that we'll come to their rescue, but they will never come to ours. And I want you to remember that we said this. Pemirsa, 1 bulan operasi militer ke Iran, Amerika Serikat mengalami kerugian hingga miliaran dolar atau puluhan triliun rupiah. Media The Wall Street Journal melaporkan Amerika mengalami kerugian hingga 2,9 miliar dolar atau setara dengan 50 triliun rupiah. Sumber dari Pentagon terus menyebut kerugian tersebut berasal dari kerusakan peralatan militer usai serangan yang menargetkan ribuan titik di seantero Iran. Di antaranya 3 pesawat jet F-15 yang ditembak jatuh secara tidak sengaja menghabiskan anggaran 300 juta dolar. Sementara untuk memperbaiki pesawat F-35 yang jatuh mencapai 82,5 juta dolar.